Hi all, welcome again. Okay, so yeah, like in the yesterday session, we discuss about the project part, right? So today we'll be going further with the project. So yeah, as we discuss, please keep on mute. Yeah, okay, thank you. Okay, yes, as we discussed in the last session regarding the project, right? We just have some overview related to project. So within a project, like this one is the manual project, right? Manual software testing project. Okay, for this project these are the some key highlights points, so one by one we are going to cover it. First one, like first one, we need to understand the project, right? We need to understand project, what is it about, what are the functionality and all. Firstly, we need to understand about the project. Once we have some basic introduction about the project, then we'll start exploring the functionality for a particular project. Guys, project means your software application development is going on, and as a tester आप testing का काम करने वाले हो, right? So yes, so for project entire team will be working, and as a test team member you will be working as a tester, right? सो वहां पे हमें है ना प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, देन प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग हम करते हैं, राइट? बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी कैसी चल रही है, डिपेंडिंग अपॉन, then there will be a next phase, that is the test estimation. So these are somewhat steps. Okay, ये हम steps देख रहे हैं for the manual project. Test estimation होता है, then test planning होता है, right? जैसे हमने SDLC के phase में एक phase देखा था, that is the testing, and within testing we have STLC phase, software testing life cycle, right? And during that phase we have uh, requirement analysis and test plan creation, right? Okay, once we done with the test plan, then we'll be moving ahead for the test case designing, and for that what we need a test scenario, right? Then based on this test scenario, we'll be writing a test cases, and we are getting reviewed it from teammate or from team manager. Okay, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कंपनी, आपके जो भी सीनियर कलीग्स है, या आपके कलीग्स है, या आपके टीम मैनेजर है, टीम लीड है, या जो भी टेस्टिंग मैनेजर है, उनके एंड से एक बार आपके टेस्ट केस का रिव्यू होगा. ओके, एंड वंस द रिव्यू इज डन, देन एनवायरनमेंट सेटअप एंड बिल्ड डिप्लॉयमेंट होगा. इसके लिए अलग से टीम होती है. ओके, और या तो आपके सीनियर डेवलपर कर सकते हैं, या कोई तो स्पेसिफिक पर्सन रहेगा फॉर द बिल्ड डिप्लॉयमेंट. एंड इनकेस अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसका डॉक्यूमेंटेशन का आपको नॉलेज रहेगा, या डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया जाएगा ना, अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं, राइट? देन जैसे ही एनवायरनमेंट सेटअप होता है, बिल्ड डिप्लॉय होता है, ओके, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, तो हम टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग एग्जीक्यूशन. ओके, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट एवर टेस्ट केसेस वी हैव रिटन, राइट? ओके, जैसे ही टेस्ट केस हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, बेस्ड ऑन दैट विल बी प्रिपेयरिंग अ बग रिपोर्ट, राइट? ओके, जो भी हमें डेविएशन मिलता है इन एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, दैट डेविएशन वी आर मार्किंग एज अ bug, right? And that is called as bug reporting. And surrounding to bug, we also need to track, hence that bug life cycle is important, the all different phases. Once we report the bug, that bug gets validated. Based on that it will get reject or not, right? Based on the status, if the bug is already duplicate, then it is marked as duplicate. If bug is having low priority and some other priority, high priority bugs are in pipeline, so that can be deferred for later phases. If the bug is on top priority, then it will get assigned to a particular developer, then its status will be open, developer will work upon that, and he'll mark it as fixed. Okay, once that particular bug is fixed by the developer, as a tester we are retesting that, and due to that, if any impacted model are there, so we are performing regressions around into that as well. Okay, and during retesting or regression, if we found like that bug is causing again issue, at that time we are again reopening that bug and assigning to the developer. Likewise, this is the complete tracking of your bug, right? Okay, once we done with this, then these are the some testing types we are performing. Okay, out of that, sanity testing we are performing to check the build stability once the build is deployed.
retesting we are performing to in order to ensure the bug is fixed or not. Okay, then regression testing we are performing due to the bug or any modification made into the application, and due to that if there is any impact on another model, that is nothing but regression testing, right? And once we done with all kind of test execution, bugs are fixed. Okay, there are no major bugs. Okay, all the things are documented well, then we'll go for the test sign up. That is the closure of our testing phase, right? So all these steps we are going to see in a detail in upcoming slides one by one. So let's move ahead. Okay, first first step is to understand the project, right? That is very much important when we are working upon any project, right? जब भी हम कंपनीज में काम करते हैं, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले होते हैं ना, तो वहां पे हमें या तो ट्रेनिंग मिलता है या उसी का पैरेलल वर्ड होता है केटी। केटी मींस नॉलेज ट्रांसफर सेशन, राइट? आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगा, या तो बेसिक केटी सेशंस मिलेंगे। जो भी आपके प्रीवियस सीनियर्स उस पे काम कर रहे हैं, आपके टीममेट्स काम कर रहे हैं ना, उनके थ्रू आपको सेशंस रहेंगे। ओके, काइंड ऑफ ट्रेनिंग। उस सेशन में पर्टिकुलरली आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, उसी प्रोजेक्ट के सराउंडिंग आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, उसकी फंक्शनलिटी समझ सकते हो वहां पे। ओके, और डॉक्यूमेंट से भी और एडिशनल डिटेल हमें पता चलती है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स, for our demo purpose we'll be considering open cart application, right? For it's a e-commerce platform, ये basically e-commerce platform application है, right? So इसमें different different models है। I'll be opening up that URL. Okay, just अभी हम थोड़ा on a high level देखते हैं। e-commerce platform है जहाँ पे login functionality है। okay, जहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी है, हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, देन विल बी एडिंग दैट प्रोडक्ट टू द कार्ट, right? And then we can do the payment, and then particular product will get delivered, right? If the product is defective or we don't like the product, we can also return up that. So similar kind of functionalities deploy, or similar kind of features available within the application. Okay, so for this application we have two two panels. One is the front end, which is the public user or end user is going to use, and another one is the admin panel, from where all the products are uploaded, right? Where all the products are updated. Let's take an example of any online shopping website, for example Flipkart, Amazon, right? दे हैव फ्रंट फेस एज अ एंड यूजर। हम जब भी विजिट करते हैं वेबसाइट, राइट, वहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज करते हैं, जो भी लोकेशन डिटेल है वगैरह फिलअप कर देते हैं, एंड टाइप ऑफ पेमेंट मोड हम सेलेक्ट करते हैं, देन लेटर ऑन डिलीवरी ट्रैक करते हैं, राइट? एंड लेटर ऑन हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर होता है। इनकेस हमें वो रिटर्न करना है तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं, राइट? सो दीज ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल विद द एप्लीकेशन। जो हमें फ्रंट एंड पे दिखता है ना एज ए एंड यूजर, दैट इज द फ्रंट एंड, एंड बैक एंड मींस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, उसके प्राइसिंग, उसके डिस्काउंट, जो भी चलता है ना फ्रॉम द एडमिन साइड, उसी सेम चीज के लिए है ना बैक एंड से एडमिन अकाउंट होता है, राइट? और वहां से ही सब प्रोडक्ट अपडेट होते रहते हैं। ओके, सो हमें जो भी टेस्टिंग करना है ऑन अ फ्रंट साइड, मतलब एंड यूजर एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करना है। फॉर दैट रीजन ओपन कार्ट इज द फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ओके, इसी का हम यूज लेने वाले फॉर अ डेमो पर्पस। यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स सी, ये पर्टिकुलर यूआरएल है, विल सी। ओके, सो यहाँ पे ना गाइस, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आपको है ना थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो याद रखनी है आपको। इंट्रानेट एप्लीकेशन, internet application. Okay, so intranet means it will be access within your company only. Okay, जो आपके कंपनी के नेटवर्क में ही एक्सेस हो सकता है, that one is the intranet application. And internet application, it means it can be accessed outside of company as well. कंपनी में तो हो ही सकता है, but outside as well we can access in right? So आपका जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी एप्लीकेशन है, हम सभी यूज कर सकते हैं, राइट? पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय भी यूज कर सकते हैं, और हम एज ए एंड यूजर भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वन इज द इंटरनेट एप्लीकेशन। बट उसी एप्लीकेशन का जो भी एडमिन पैनल रहेगा,
to the specific company people ही उसको access कर सकते हैं, right? Hence that one is the intranet application. Okay, intranet application. There is a small difference, internet and intranet. Okay, intranet only within a company we can access that application, and internet outside of the company as well we can access the particular application. Okay, so and one another terminology surrounding to the project is mockup screen. मॉकअप स्क्रीन मींस जब भी आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, आपका सॉफ्टवेयर, आपका मोबाइल एप्लीकेशन बनता है ना, उससे पहले उसका डिजाइनिंग होता है। जैसे हमने फेज देखा था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कलेक्शन एंड एनालिसिस, देन डिजाइन फेज आता है, राइट? सो उसमें जो हाई लेवल एंड लो लेवल डिजाइन होते हैं ना, दैट आर एक्चुअली योर मॉकअप स्क्रीन्स। ओके, बेस्ड ऑन दैट आगे आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ओके, ठीक है। So these are the basic introduction about the project. So let's visit the website so that you guys will have a few about the particular application. Okay, let me copy this. Let me try open. Hello. Hello. Yes. Sir, front end and Okay, so just now guys, like we have learned two terminologies. One is your front end application and another one is back end. Okay, so yes, this one is your front end application where end users are interacting with the application, right? So ये आपको जो भी visible है as a end user, it's a front end application. And if particular application का admin panel है, right? As of now this one is the end user application, right? यहाँ पे हम जाके particular product search कर सकते हैं, right? For example यहाँ पे मैंने click किया, right? Particular product browse कर सकते हैं, then particular product हम add to cart कर सकते हैं, right? Okay, and for example yes, this product we need, and जो भी basic details है, जो भी mandatory fields है, वो सारे put up करके हम at the end of या add to cart कर सकते हैं। ये सारे required detail हमें fill up करनी पड़ेगी, right? So ये जो particular आपको interface दिख रहा है, this is the front end for end user. अभी जैसे ये पर्टिकुलर कंपनी है, फॉर एग्जांपल ओपन कार्ट, ओके, इनका कस्टमर के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पे जो भी फोटोज है या जो भी प्रोडक्ट है, उनकी जो भी प्राइसिंग है वो चेंज करनी है उनको, राइट? पर्टिकुलर, सो वो कहाँ से होगी? तो वो एडमिन पैनल से होगी। ओके, लेट मी गो टू दी, वन मोमेंट गाइस। ओके, लेट मी गो टू दी both panel open cart. Is the screen visible guys? Please confirm. no. Yes. No. No. Okay, one moment, I'm just quickly sharing now, please check. Yes. Yes, sir. Okay, fine. Yes. Thank you. Yes, chalo. Okay, so yeah, this one is the main website, right? opencart.com. This one is the main website. Here you can see there are two kind of links available. One is you can download it and you can install it, and another one is the view demo, right? Right now I'm just clicking on the view demo. We need to visit this app, visit this link. Okay, I'll share later in the notes only. Okay, यहाँ पे जैसे हम विजिट करते हैं ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो लिंक्स है। एक वन इज द फ्रंट स्टोर एंड अनदर वन इज द एडमिन स्टोर. So this one is your front end store which is visible to the end user, and this one is another store. Okay, back end of the store from where we can update the products. Okay, let's see, let's visit the front store first and we'll move to the admin panel later. Okay, I'll be just opening here. Okay, so this one is your front face store, like where end user can visit, right? जहाँ पे end user visit कर सकता है, particular product choose कर सकता है, and based on need particular product buy करके, राइट, बाय करके लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक फंक्शनलिटी। कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम विजिट क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सर्च पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड अगर हमें पसंद आता है तो देन एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू परचेस द सेम, राइट? सो ये आपका फ्रंट एंड हो गया, आपका फ्रंट स्टोर हो गया जहाँ पे एंड यूजर विजिट करता है। ओके, I'll be going back again to the yes, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको second panel दिख रहा है, that is the admin. I'll be just quickly opening into the another tab. तो यहाँ पे by default जो default credentials है वो डेमो है,
I'll be just logging to the panel. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. right? Okay, chalo. Yes. I'll be directly moving to the product part. Let me, okay. ओके, यहाँ पे आपको है ना डिफरेंट बहुत सारा वेरिएशंस है, राइट? यहाँ पे आप अगर देखते हो ना, तो एंड यूजर को जितना काम है, जितने प्रोडक्ट परचेस करने हैं, सर्च करने हैं, उतना ही यहाँ पे विजिबल है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द डैशबोर्ड, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, टोटल सेल कितना है, टोटल कस्टमर कितने हैं, अभी एप्लीकेशन पे कितने पीपल्स ऑनलाइन है, पूरा उसका चार्ट वगैरह, एंड लेटेस्ट ऑर्डर किसने पुटअप किए, सारा कुछ हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये एडमिन साइड से कंपनी, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, उनको ये सारा डिटेल चाहिए, राइट? सो यहाँ पे अगर हम, फर्स्ट वन इज द डैशबोर्ड, जहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है, राइट? जैसे हम कैटलॉग पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए कैटेगरीज है, प्रोडक्ट्स है, ओके, लाइकवाइज डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। आई विल बी डायरेक्टली मूविंग टू द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे है ना आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। सो लाइक व्हेन वी विजिट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे अगर विजिट करते तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी प्रोडक्ट हमें फ्रंट एंड पे दिख रहे हैं, स्टोर पे दिख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, राइट? अगर मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड अप करना है इनटू द लिस्ट, सो मुझे यहाँ से एडमिन पैनल से करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस, सिंपल सी। आई विल बी जस्ट clicking up into the ad. I can have the product name, I can have the description, all data, mandatory data I just need to fill up. Let's add test test 001 product, for example. Okay, this one I am doing from the admin panel. Okay, let's check. Description will be the same, meta tag will be also same. Let's see, let's save. Okay, you do not have permission to modify this product. Why? Because this one is the demo page, we can perform testing over here directly. Okay, this one is just a demonstration page, we can check out the options. Okay, yeah, likewise. And once we download that and install into our PC, and at that time we are able to modify that particular particular product as well. For now we can visit, we can check, we can explore different options. तो यहाँ ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ऑन द फ्रंट स्टोर, सारे कुछ मैनेज हो सकते हैं आपके एडमिन पैनल से। यहाँ पे आप डिफरेंट फीचर्स देख सकते हो, पर्टिकुलर कि मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन है फॉर योर कंपनी, राइट? जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड है सब यहाँ पे आप वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स अपलोड कर सकते हो। आपके वेबसाइट पे किसी ने रिव्यू दिया है तो पर्टिकुलर रिव्यू आप यहाँ से डिलीट एडिट कर सकते हो। डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है। आप अगर आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लेआउट अगर चेंज करना चाहते हो, वो चेंज कर सकते हो। तो आपको है ना आज ये बेसिकली एप्लीकेशन है ना एक्सप्लोर करना है पोस्ट द सेशन। ओके, जस्ट एक्सप्लोर करना है, बेस्ड ऑन दैट हमें स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन है फॉर द टेस्टिंग पर्पस वो क्रिएट अप करना है। क्लियर है गाइस? फ्रंट एंड स्टोर एंड बैक एंड स्टोर मतलब सिंपल, फ्रंट एंड आपका जहाँ पे एंड यूजर विजिट करेगा, एंड एडमिन पैनल इज योर बैक एंड स्टोर जहाँ से आपके प्रोडक्ट अपडेट होंगे। क्लियर है इतना डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. ओके परफेक्ट, चलो ठीक है। ओके, सो यस, सो विल बी मूविंग अहेड। हम वापस से पीपीटी में आते हैं सो दैट यहाँ से और क्लैरिटी मिले। ओके, सो फॉर द प्रोजेक्ट वी फर्स्टली अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, राइट? Okay, so within this project, like we have e-commerce platform application, right? Web application, and within this application we have different models. Okay, login, search, product, add, product, and there are two main models. One is your front end, that is the end user will be visiting, and another one is the back end where admin can update all the products, all the information, right? And this one is the URL, and from this URL we can have two options. One is the front end and another one is the admin panel. Sorry. Okay, so yes, I'll be moving with the functionality side. Okay, okay, so second one is to understand and explore the functionality, right? हमें सॉरी, हमें है ना अभी जो भी फंक्शनैलिटी है विथ स्पेसिफिक पर्टिकुलर ओपन कार्ट एप्लीकेशन वो हमें चेक करनी है। So in order to understand the requirement, right, we need to read the FRS document.
Okay, then we need to understand the software requirements, right? And based on that we can start the testing. Okay, so यहाँ पे while reading the document we need to highlight, guys please keep on mute, we need to highlight some important features, right? So that we can have test scenarios from that requirement. Okay, so for example पर्टिकुलर जो भी हमने वेब एप्लीकेशन अभी जस्ट नाउ रिव्यू किया, फ्रंट एंड एंड एडमिन पैनल, एज ऑफ नाउ आप सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस कीजिए। ओके, एडमिन पैनल पे आते हैं हम, एज ऑफ नाउ सिर्फ हम फ्रंट एंड पे फोकस करते हैं। रिक्वायरमेंट वन, जो भी आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा BRS या FRS, राइट, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे एक्सप्लेन रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है। ओके, रिक्वायरमेंट फर्स्ट क्या है, देखिए, द शॉप होम पेज नीड्स टू बी यूजर फ्रेंडली। ओके, जो भी आपके पर्टिकुलर शॉप का फ्रंट फेस है, होम पेज है, वो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, व्हाइल एट द सेम टाइम हाईलाइटिंग द शॉप्स प्रोडक्ट। जैसे हमने विजिट किया था तो पेज हमें कैसा लग रहा है, लुक एंड फील गुड लग रहा है, राइट, एज वेल एज हम इजीली प्रोडक्ट सर्च कर पा रहे हैं। सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट सराउंडिंग टू दिस रिक्वायरमेंट है ना, हम टेस्ट सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट केस क्रिएट कर सकते हैं, वो आगे आएगा कैसे कर सकते हैं, राइट। अभी जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। द हेडर विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ पेज, जो भी आपके पर्टिकुलर वेबसाइट का हेडर रहेगा वो टॉप पे होना चाहिए, एंड ऑन एवरी पेज ऑफ स्टोर, मतलब जो भी मेनू बार से आपके, राइट, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के प्रोडक्ट सर्च के, वो सभी वेब पेजेस पे लिस्ट होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन रिक्वायरमेंट इज हेडर हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो भी हेडर लिस्टेड है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए, स्टोर का लोगो, करेंसी, देन शॉपिंग कार्ड, सर्च बॉक्स, लिंक्स, टेलीफोन एंड माय अकाउंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन एंड वहां से समझते हैं सराउंडिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी ये तीन रिक्वायरमेंट थे। आई विल बी जस्ट गोइंग टू द होम पेज। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट थी कि जो भी हमारा लाइक फ्रंट फेस है स्टोर का, राइट, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, राइट, एंड इजी है, प्रोडक्ट हाईलाइट हो पाए, राइट। सो ऑन अ UI लेवल हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन रहेगा ना, उसमें आपको ये लिस्ट रहेगा कि यहाँ पे आपके हेडर्स है, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे सर्च बॉक्स है। सो फ्रॉम दैट सराउंडिंग टू दिस रिक्वायरमेंट हम वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, देन आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हेडर शुड बी ऑन द टॉप ऑफ पेज, तो आपको दिख रहा है, राइट, जो भी आपका पर्टिकुलर हेडर है इट इज ऑन द टॉप। यहाँ पे देखिए, जो भी आपका हेडर है ना मेन, ये ऑन द टॉप है, दैट इज द अनदर रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड वन रिक्वायरमेंट थी जिसमें हेडर में आपके ऑप्शंस होने चाहिए, स्टोर लोगो होना चाहिए, ओके, देन करेंसी ब्लॉक होना चाहिए, तो सारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखिए। ओके, सो आपका स्टोर लोगो है, देन सर्च बॉक्स है, करेंसी ऑप्शंस है, माय अकाउंट ऑप्शंस है। लाइकवाइज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसी के सराउंडिंग हमें वो स्टेप बाय स्टेप चलना है, राइट। सो ये क्लियर है गाइस, जो रिक्वायरमेंट रहते हैं ना उसी के हिसाब से हमें टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस क्रिएट अप करने हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द सेकेंड फेज। ये पार्ट क्लियर है थोड़ा? ओके, सो यहाँ पे देखिए, these are the multiple requirements. Okay, we'll discuss more. हम बेसिक बेसिक लेके चलते हैं। ओके, जैसे हमने फर्स्ट फेज में क्या देखा कि लाइक प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा, देन सेकंड फेज में हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है उसके सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। ओके, okay, different different requirements होती है, right, sorry about this number, this one is the third number. Okay, then later phase जो आता है ना, that is the test plan, मतलब particular जो भी आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेस्ट प्लान चाहिए, राइट, एंड इट इज डेवलप बाय द पर्टिकुलर टीम लीड और टेक लीड। ओके, आपका जो भी टेस्ट लीड रहेगा ना, वो डेवलप करते हैं बेसिकली टेस्ट प्लान एंड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट इंजीनियर। ओके, सो इसमें जैसे हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, इसमें मेंशन होता है व्हाट टू बी टेस्टेड, व्हाट नॉट टू बी टेस्टेड, हमें टेस्ट क्या करना है, टेस्ट क्या नहीं करना है, टेस्ट का स्कोप क्या है, हमें फंक्शनल पे जाना है, नॉन फंक्शनल पे जाना है, यूजेबिलिटी करना है, मैन्युअली करना है, ऑटोमेशन करना है, कौन सी टूल यूज करना है, ये सारा कुछ आपका लिस्ट रहेगा विद इन योर टेस्ट प्लान। ओके, सो दिस इज सराउंडिंग टू टेस्ट प्लान।
और टेस्ट प्लान बनाने के लिए जैसे हमने देखा था हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो FRS, प्रोजेक्ट प्लान, और प्रोजेक्ट प्लान में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान, पर्टिकुलर टीम का उसमें स्ट्रक्चर रहेगा, प्रोजेक्ट डिजाइन प्लान उसका डिजाइनिंग रहेगा, टेस्ट प्लान रहेगा, राइट, डिलीवरी रहेगा, कब हमें डिलीवर करना है, टेस्ट एस्टिमेशन हमें कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेस है, ये सारा कुछ डिटेल्स है ना आपका, ये बेसिक कंपनी लेवल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में होगा। एंड हर एक प्रोजेक्ट के सराउंडिंग जो भी टेस्टिंग परफॉर्म होगा ना, उस पर्टिकुलर टेस्टिंग में आपका टेस्ट प्लान भी होगा, राइट। मतलब टेस्टिंग के लिए हमें क्या स्कोप में है और क्या स्कोप में नहीं है, हमें फंक्शनल पे जाना है, नॉन फंक्शनल पे, जो भी चीजें है ना वो सारी कुछ लिस्ट रहेगी आपकी टू द टेस्ट प्लान। ओके, ठीक है, फाइन। ये तो हो गया ऑन टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंटेशन साइड। देन नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट फेज आता है गाइस एज फ्रॉम द टेस्टर साइड। ओके, एज अ टेस्टर हमें सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट हमें कैप्चर करना आना चाहिए, दैट इज द टेस्ट सिनेरियो। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हमें बनाना है, दैट इज द टेस्ट सिनेरियो। देखिए अभी जैसे हमने थ्योरेटिकली बात की थी, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो, व्हाट टू बी टेस्टेड और एरिया टू बी टेस्टेड, दैट इज द टेस्ट सिनेरियो। वी कैन रेफर टू द टेस्ट प्लान, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कंपनीज के डॉक्यूमेंट है ना, बेस्ड ऑन दैट कौन कौन सी फीचर हमें स्कोप में है, पर्टिकुलर फीचर वी कैन कंसिडर फॉर द टेस्ट सिनेरियो। ओके, based on that feature we can have, guys, okay let me okay, based on that feature we can have multiple test scenarios. Okay, fine. Okay, let's now see the let's try to understand the template. Okay, okay, within the test scenario, first title we can have the test scenario ID, then we can put the reference documentation, then we can put the reference documentation, then we can put the link to the test scenario, and based on that also we can derive the multiple test cases and how many number of test cases we have derived for the particular test scenario, that also we can populate here. Okay, so this is the basic template format for test scenario. Okay, we'll have also Excel format. Okay, let me share and yeah, let me share that as well. Okay, so likewise we also have a Excel test format. Post the session I'll be sharing with you, so can you can write up into the same. Okay, so basically हमें टेस्ट सिनेरियो आईडी होता है, देन रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन होता है, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी, राइट, उसकी प्रायोरिटी रहेगी और कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस हम एग्जीक्यूट, लाइक कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस हमें राइट अप करने हैं, वो उसका काउंट एक रैंडमली हम पुट अप करते हैं। एंड जैसे जैसे टेस्ट केस हम ऐड अप करते चलते हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट भी हम अपडेट करते हैं, राइट। सो लाइकवाइज दिस वन इज योर टेस्ट सिनेरियो टेम्पलेट, राइट। सो इसमें आपका फर्स्ट टेस्ट आईडी, टेस्ट सिनेरियो आईडी रहेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी एंड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, राइट। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन साइड। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आपका क्रिएट होगा टेस्ट सिनेरियो, एंड जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियोज आपको डिराइव करने हैं ना, ये आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा। आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन से भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, हम देखने वाले हैं इसमें भी। ओके, चलो देखिए, जैसे ही टेस्ट सिनेरियो का एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट होता है, कौन कौन से टेस्ट सिनेरियो हमें टेस्ट करना है, ये चीजें पता चलती है, राइट। लेट मी गो टू द एप्लीकेशन, वहां से भी थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ऑन द एक्चुअल एप्लीकेशन आपका हर एक मेन्यू जो आपको विजिबल है, फॉर एग्जांपल विल बी स्टार्टिंग विथ रजिस्टर, रजिस्टर अकाउंट इज योर वन टेस्ट सिनेरियो, login account is your another test scenario, right. Likewise your cart, add to cart is your another test scenario, shopping cart is also another test scenario, checkout button is another test scenario. Likewise your these are the different options, so these are the different test scenario. You can go down, your feature menu is another test scenario. You can come here, on the footer side we have multiple options, right. We can take a test scenario surrounding to that, like contact us, about us, and we can have multiple test cases with respect to this each requirement. Okay,
So see, for surrounding to any web application, mobile application, we can have multiple number of test scenarios. And once we click any feature or any functionality, and within that functionality also we have multiple options. So we can derive multiple test cases surrounding to this particular scenario. Okay, right, fine, sure. So guys, yeah, till now we understood about the how, like requirements, then about the test scenario. Okay, based on this test scenario we need to proceed further and we need to write the test cases, right? Okay, so within this test case, like while writing the test cases, we need to apply all the knowledge, all the techniques which we have learned into the previous sessions, right? Based on the type of testing we need. Okay, so likewise, basically we for writing the test cases we are referring to the test scenario, then the requirement documentation, right? While writing test cases we need to consider different type, like UI testing, positive scenario we need to consider, negative scenario, then field level validation, error messages, input length, data format, mandatory field, non-mandatory, right? And then database is database testing is another type of testing, right? Then test data creation, positive, negative, valid, invalid, links are working or not, home page title, logo, right, menu bars. So these are the different parameters we need to consider while writing the test cases, because it totally depends upon which scenario we have selected. For example, registered functionality scenario we have selected. Surrounding to that, we can have multiple test cases that will cover. Okay, in some next slides. Okay, once we done with the test case writing using the different testing techniques like boundary value analysis, equivalence class partitioning, right, that we can take in use for the data creation, state transition, decision making, right? So these are some techniques for the different positive negative data creation. Once we done with the testing, right, sorry, test case writing, we can have a review with the team, right? So we can review the test case with the team. Peer means our team member. We can do testing of documentation using different methods, static methods, right, which we have studied earlier, like inspection, walkthrough, and external review. External means the person out of the organization. Okay, likewise we can review the document with the help of team. And once we done with the review from the test case side, right, already we have written the test scenario, so that we can go ahead and we can create the RTM, that is the requirement traceability matrix. That is nothing but the mapping in between your requirement and test cases, right? So within that we can have requirement ID, then we can have test scenario, and we can have number of test cases. And once we done with the execution, we can put the status over there as well. Likewise, we can go ahead and we can prepare the RTM document, which includes your requirement ID and this basic things, right? Okay, so up till now, like we have understood about the project, then we have understood about the requirement. Once the requirement are understood, then we will go ahead and will create the test scenario. And across the test scenario, we are creating test cases. Once the test cases reviewed from the team, then we'll be creating RTM document, right? And once that document is created, then next phase is the environment setup. Right now we need a build from the development team, and once that is deployed, then we can go ahead and actually start with the execution. So yeah, for now yeah, I'll be just keeping this build deployment process. Okay, yes, we'll be moving ahead with the test execution. We'll see build deployment. Okay, because that one is the important phase during the deployment process. Okay, we'll move ahead with the execution phase. Okay, so during execution, see, we need to just execute the test cases which we have written already, right? We have already written the test cases. We now it's time to execute particular test cases. We can go ahead, we can have the particular test case document with us. We can perform the number of steps which we have written already, right? And surrounding to that, we can check what is our expected result,
and what is actual result we are getting. Okay, once the expected and actual result are matched, then we'll be uh, passing the particular test case, and if any sort of where deviation is there, then we'll be failing the test case. So this one is the test case execution phase. Okay, so during test case execution we'll be making a decision whether test case is pass or fail, and for failed test case we are raising up the bug. Okay, so this one is the test case execution phase. Okay, so yes, till here guys, like we are done with the understanding the project, then understanding the requirement. Okay, then based on that deriving the test scenario document. Based on that we are going to write up the different test cases, and once the build is deployed into the testing environment, then we can go ahead and execute the test cases. Okay, so once the test case is executed, then we'll have a result like whether the test case is pass or failed. If the test case is pass, then we are marking it as pass, and if it get failed, then we'll be marking it as failed, and if we are going to raise the bug against particular failed test case, right? So that one is the next phase, that is the bug reporting. So during bug reporting, we are reporting particular bug to the team with the help of one template where it contains the bug ID, the bug description, steps to reproduce. We can have the steps from your our test case document only. जो भी हम test case document बनाते हैं ना, उसी में डिटेल्स रहेगी basically आपके. ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट सब सेम ही डिटेल्स रहेगी. आपका सिर्फ बग आईडी डिफरेंट रहेगा. आप यहाँ पे in case of bug report there are two important parameters which we have already covered in theory. One is your severity and priority. Severity describes how how it is impacting the business, how it is impacting the functionality, and priority determines how important it is to fix up, right? Likewise we can have severity, blocker, critical, major, minor. We can have priority high, medium, low, right? So that thing we can put up based on the type of bug. Okay, so these are the fields are there in the bug report. So likewise we can create a Excel template, and within that Excel template we can put up the data. Okay, and tracking is nothing but today we have reported the bug, developers start working upon that after 2 days, and like after fifth day the bug is fixed. So we need to track that bug, like what is current status, as we have covered into the bug life cycle. Likewise for that we can refer to this documentation, right? Okay, and during the project, like for the build stability we can go for smoke sanity testing. For bug fixes we can go for retesting, and for the impact checking we can go for the regression testing, right? So these are the different terminologies in a cycle. We are going to execute them, or we are going to use them in a repetitive manner. Okay, once we're done with the like all the bug fixes, all the test cases are executed, there are no major bugs, right? At that time we are preparing a summarized report for the test closure, right? We can have a bug report and test case execution report. So and we'll be sending with the team for the review, and once that is done, then we'll be going ahead and signing off the particular report. So it concludes the testing phase is done, the system testing phase is done for a particular application. So this is the complete flow for your system testing, okay, during the testing.